Namaskar, Sat Shri Akal, Salam, hello dosto. Welcome once again to your favorite financial education channel, stockincome.in, and we are right here into our series about weekly market outlook. Right? My name is Alok Verma और मैं इंडियन स्टॉक मार्केट्स में एक रेगुलर इन्वेस्टर और ट्रेडर हूँ एंड जैसा मैंने पहले भी कई बार बताया मैं रेगुलरली एनालिसिस करता हूँ मार्केट का एक आउटलुक डेवलप करता हूँ फॉर माय ओन पर्पसेस right, and that is what I share with on this channel also, so that maybe other people can also benefit from it. However, standard disclaimer, I am not a SEBI registered advisor. मैं जो भी यहाँ बोलता हूँ, please it should not be taken as an advice to buy or sell any security or stock, right? If you want to invest in markets, which by the way I feel is a very good place, right, very lucrative place, but if you want to invest, buy, sell anything, please consult your financial advisor, do your own research, right? Because it's your money, your decision, your risk, your benefit also, right? So let's move forward, and we are talking about now week starting 23rd of May 2022, and let's see what things I have for you this time around. तो हमेशा की तरह हमने सारे फैक्टर्स को दो हिस्सों में बांटा है, न्यूज़ और डेटा रिलेटेड फैक्टर्स और टेक्निकल फैक्टर्स. अगर न्यूज़ और डेटा रिलेटेड फैक्टर्स की बात करते हैं तो इंडाइसेस पे चलते हैं. इंडियन मार्केट की जो दो की इंडाइसेस है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, हैव बीन पॉजिटिव ऑन अ क्लोजिंग बेसिस फॉर द वीक, अराउंड 3 to 3.5%. बोथ इंडाइसेस हैव बीन पॉजिटिव, but week has been hugely volatile and we'll talk about that a little later. On the other hand, US की जो की इंडाइसेस हैं, they have been negative by similar figures, 3-3.5% के करीब वो नेगेटिव रही हैं. So India is clearly outperforming the world, the US and other parts of the world as well. और अगर हम साल के शुरू से बात करें तो इंडियन निफ्टी is down around 6.25%, whereas S&P 500 is down around 16-17%. और नेस्डेक तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब है, अराउंड 26-27% डाउन है नेस्डेक. सो इंडिया इज़ क्लियरली आउट परफॉर्मिंग, बट लेट्स सी हाउ थिंग्स पैन आउट गोइंग फॉरवर्ड. FI बाइंग और DI बाइंग की बात करें तो वी हैव सीन दैट फॉर many months now FIs have been continuously selling on a net basis. They buy also, they sell also, but net they've been selling. And last few weeks in month of May especially, the buying has been, the selling has been ferocious by FIs, right? They've already sold something to the tune of 44,000 crore in this month, and the month is not over yet, right? So that is a cause of concern. However, if you were to nitpick, if you were to look at very recent data, शायद आपको ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा बाइंग जो सेलिंग की जो इंटेंसिटी है FIs की थोड़ी कम हुई है, और DIs की जो बाइंग की इंटेंसिटी है थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है. पहले रोज़ 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए का नेट सेलिंग होती थी, अभी पिछले कुछ दिनों से 1 से 2 हज़ार करोड़ की नेट सेलिंग हो रही है, बट इट इज़ स्टिल नेट सेलिंग. बट DIs हैव बीन स्टेपिंग अप टू अ वेरी गुड एक्सटेंट. So let's see, move forward on this. India VIX, we know has been high for many weeks now. इस बार की VIX लास्ट वीक के मुकाबले 1.6% कम हुई है, so it has settled at 23.1%, 23.1 for the week. But during the week there has been lot of volatility. The week has been very volatile, and during the week there has been lot of volatility. VIX काफ़ी ऊपर भी गई थी, कुछ नीचे भी आई थी, but right, we on a end-to-end basis for the week it's almost similar. रिजल्ट सीजन चल रहा है, कई रिजल्ट्स आए, ज़्यादातर रिजल्ट्स ठीक थे या अच्छे थे, right? So these are the things on your screen, you can have a quick look at them, right? And next week also there going to be some results, some dates I have listed out, so please keep an eye open, right? They give us some indication of how things are going to pan out. आगे कैसा होने वाला है, कुछ रिजल्ट से हमको आइडिया मिल जाता है, राइट? और एक चीज़ की हमने कई बार बात करी है, वो हमको लगातार तंग कर रही है, वो है इन्फ्लेशन. हमने कुछ देर पहले बताया था कि US में इन्फ्लेशन 40 साल के हाईएस्ट लेवल्स पर है, और अभी सिमिलर न्यूज़ जो है UK से भी आई है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जिसको बोलते हैं, वहाँ से भी इन्फ्लेशन इज़ एज हाई एज इट यूज्ड टू बी 1982, जो कि बहुत डिफिकल्ट पीरियड था उन लोगों के लिए. इन्फ्लेशन यूज्ड टू बी इन द रेंज ऑफ 8.99%, एंड बहुत सारे लोन डिफॉल्ट्स हुए थे, राइट? एंड इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़े थे उस समय. पीपल बिटर मेमोरीज ऑफ दैट period, and similar things are coming here.
9% इन्फ्लेशन रिपोर्ट हुआ है यूके का अप्रैल के लिए, और प्रोजेक्शन जो है उनके बैंक का ऑफिशियल प्रोजेक्शन is that it might go to 10% in the coming weeks or months. So they're struggling with it like most of the parts of the world. We are also struggling with inflation in India. So उससे होता क्या कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, इंडियन इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, और चांसेस है कि और भी बढ़ सकते हैं, राइट. सो दैट्स हाउ इट इज. इंडोनेशियन पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स. अभी आप बोलेंगे पाम ऑयल एक्सपोर्ट से क्या मतलब है, राइट. हमको निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, पाम ऑयल कहाँ से आ गया. वेल, पाम ऑयल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी. दुनिया का जितना वेजिटेबल ऑयल का ट्रेड और कंजम्पशन होता है करीब 1/3 पाम ऑयल का होता है, और इसके मेन सप्लायर्स कौन हैं. बिगेस्ट सप्लायर्स इंडोनेशिया, and then other big suppliers are Malaysia, Ukraine and Russia. Now because of Russia-Ukraine war, already palm oil की supply chain थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रखी थी, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, पाम ऑयल के प्राइसेस बढ़े हुए थे. बट अभी इंडोनेशिया ने 28 अप्रैल को पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया. दे हैव स्टॉप्ड एक्सपोर्टिंग. क्यों? क्योंकि उनके इंटरनल डोमेस्टिक प्राइसेस पाम ऑयल के बढ़ गए थे, सो दे वांटेड टू इंक्रीज सप्लाई इन देयर ओन कंट्री ताकि प्राइसेस कुछ नीचे आ जाएं. प्राइसेस इंटरनली फॉर देम हैव कम डाउन, पर दुनिया के तो प्राइसेस बढ़ गए क्योंकि पाम ऑयल कहीं से मिल नहीं रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है. गुड न्यूज इज दे हैव लिफ्टेड द बैन एंड फ्रॉम 23rd of May onwards they will start their exports again, so that should provide some relief to the world, right. Okay, एक आप इनको तो जानते ही हैं, ज्ञान कौर. ये बड़ी नॉलेजेबल फ्रेंड है हमारी, बहुत ज्ञान है इनमें. तो इन्होंने हमें एक नई बात बताई. देखिए, हमने देखा कि मार्केट्स लगातार नीचे जा रही है. कुछ देर पहले भी मैंने बात की थी कि S&P 500 फॉर 5 वीक्स स्ट्रेट हैज़ गॉन डाउन. इट हैज़ बिकम 7 वीक्स स्ट्रेट नाउ दैट हैज़ गॉन डाउन. बट डाउ जोन्स जो कि S&P की तरह यूएस की इंडेक्स है, लगातार 8 हफ्ते नीचे बंद हुई है, क्लोज हुई है, विच इज़ समथिंग दैट हैज़ हैपेंड आफ्टर अबाउट 1932. सो 90 साल बाद ऐसा कुछ हुआ है. सो दैट शोज द लेवल ऑफ पैनिक एंड लेवल ऑफ कंसर्न इन द यूएस मार्केट्स, राइट. जब .com बबल हुआ था, लीमन ब्रदर क्राइसिस हुई थी, तब भी 8 हफ्ते तक लगातार डाउ जोन डाउन नहीं गया. इस बार 90 साल बाद ऐसा हुआ कि डाउ जोन 8 हफ्ते तक नीचे गया है, राइट. सो दिस इज इंफॉर्मेशन शेयर टू अस, ज्ञान शेयर टू अस बाय आवर फ्रेंड ज्ञान कौर. लेट्स थैंक हर. थैंक यू ज्ञान कौर. एंड लेट्स मूव ऑन. टेक्निकल्स की बात करें तो हमने लास्ट वीक हमने निफ्टी की हमने बोला था, लेवल्स एक प्रोजेक्ट करे थे, दैट निफ्टी इज लाइकली टू स्टे बिटवीन 15,700 एंड 16,400 ऑन द अपर साइड. If you look at it, the levels have been respected to the T. Nifty went up to 16,399.45. So exactly 16,400 में बोला था, वहाँ तक गई, वहीं से वापस आया. On the lower side, Nifty went very close to 16,700, did not break 16,700. So our projection has been spot on, just bang on, right? At the same time, sometimes you experience something called operation successful and patient dead. And why I say that? Because it was my analysis that Nifty stayed within this range. Nifty did stay within this range, but in trading I lost some money, right? Well, that sounds strange, but that's how it is. Luckily I was able to come out with a small loss, because this Nifty, while it stayed in that range, it has been very volatile. Every day you've seen either a gap up, huge one, or a gap down, huge one. So that has caused huge trouble to the traders, and I've also lost some money in this week, right? Luckily I was able to get out of the market, and with a small loss only. So that's fine, that happens, that's a part of life. Okay, but it's been a very troublesome week. Now I'm sharing some interesting chart with you. This is, अगर आप चार्ट को देखेंगे, ये रैली है निफ्टी की मार्च 2020 से, राइट, फ्रॉम द कोरोना स्टार्टिंग पीरियड, एंड इट हैज रैलीड वेरी वेरी शार्पली, और अब कुछ रिट्रेसमेंट देखने को मिली है. और अगर इसको हम फिबोनाची पे इंडिकेटर को प्लॉट करें, जिन लोगों को फिबोनाची इंडिकेटर, आप लोगों को मैं समझता हूँ ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है प्लीज़ थोड़ा सा रिसर्च करें, अच्छा इंडिकेटर है. तो फिबोनाची एक सपोर्ट लेवल्स या रेजिस्टेंस लेवल्स देता है. तो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट जब होती है रैली की, फर्स्ट सपोर्ट लेवल इज अराउंड 23.6% ऑफ रिट्रेसमेंट, एंड दैट सीम्स टू बी वेयर द रैली द मार्केट इज टेकिंग सपोर्ट. अराउंड 25-26% रिट्रेस किया है फ्रॉम द टॉप मार्केट ने टोटल, एंड वहाँ से कुछ बाउंस बैक दिख रहा है.
अभी बाउंस बैक कितना सस्टेन होता है हमें नहीं मालूम, बट एज ऑफ नाउ इट इज सीम्स टू बी टेकिंग सम सपोर्ट, सो देयर इज सम कन्विक्शन इन दिस बाउंस बैक कि शायद ये बाउंस बैक स्टेबल होगा और यहाँ से मार्केट ऊपर को चल सकती है, राइट, मे नॉट गो डाउन फर्दर, बट लेट्स सी। निफ्टी का ये पैटर्न अगर चार्ट हम डेली देखेंगे तो एक पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया था ऑफ लोअर हाईज एंड लोअर लोज। सेकंड हाई पहले हाई से नीचे था, थर्ड हाई दूसरे हाई से नीचे था, लोज की बात करें तो सेकंड लो फर्स्ट लो से नीचे था, बट क्या थर्ड लो सेकंड लो से नीचे था? नहीं। अभी तक जो थर्ड लो बना है और जो लगता है कि लो बन गया है वो सेकंड लो से थोड़ा सा ऊपर है। दैट शोज कि दिस डाउनवर्ड ट्रेंड माइट be arrested, might stop, right? It could still come down, but as of now it has not come down. There will be more conviction जब ये 16,400 से ऊपर convincingly trade करेगी निफ्टी, then there will be conviction that this low is formed and market might stop drifting down from here, right? But is the market going to rush up, run up? See, a lot of people have changed their views. अगर आपकी last Friday की candle देखें, there is a gap up, it opened about 200 points up and it went more than 200 points up after that. It's been a very strong rally on Friday, right? So a lot of people have changed their opinion. People who were very bearish till 2 days back have suddenly changed their opinion looking at this rally. And this is a strong rally, but is the market likely to run away from here? Some people are talking of new highs and people are talking 17,500 and so. My personal view is that as I see the Nifty may not go down much from here, but unlikely to run up also too much. Why? Because things have not improved. The world inflation has not come down. There is no sectors are down. There is some relief rally that's coming that we saw in IT yesterday. IT has a huge weightage, but there will be a lot of people who are stuck with their long positions in IT. So the moment it has gone, they'll unwind their positions, right? And that will not allow the market to go up. IT has a huge weightage. Reliance is a singular factor that largely seems to be the reason for this bit of rally. कल भी Reliance 5.5% ऊपर था. So, but market doesn't have enough wheels to go up, right? So that's what I feel. At the same time, I do feel that it may not go down from here. My opinion is market will consolidate between 16,400 on the upper side, maybe 500, and 15,700 on the lower side, right? Market actually needs to consolidate. अगर हम पिछले कुछ हफ्तों का चार्ट देखें, एवरी डे मार्केट हैज बीन गोइंग अप, गोइंग डाउन, गैप अप, गैप डाउन, ह्यूज मूवमेंट्स. दैट्स नॉट सस्टेनेबल. ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है मार्केट का. सो इट हैज़ टू स्टेबलाइज, cool down a bit, right? It's very choppy. It has to cool down a bit, and that's what I feel it should happen now, right? The results are out. Ukraine news, war news is old. Inflation news is also a bit old. Most banks, central banks, Indian and others, have taken some action to tame inflation, right? The palm oil thing is getting settled. Crude is not moving too much now. It is high, but it's not going up much more. So all that put together, it seems to be a phase of consolidation that we might see. I could be wrong, but another important thing is, जब तक मार्केट 16,700 पे गया था, हमने अभी तक पैनिक नहीं सुना मार्केट में. टॉक टू ट्रेडर्स, टॉक टू इन्वेस्टर्स, दे हैव बीन कंसर्न बट नॉट पैनिक. बट किसी वजह से अगर 16,700 टूट जाता है कन्विंसिंगली, से नीचे ट्रेड करती है मार्केट, माई वरी इज दैट पैनिक माइट सेट इन एंड मार्केट माइट गो अप टू 15,000 ऑन होल. पैनिक सेलिंग माइट कम, बिकॉज अभी तक लोगों का हौसला नहीं टूटा है. मार्केट थोड़ा टूटा है, हौसला नहीं टूटा. पर 15,700, 15,500 टूटा तो शायद हौसला भी टूटेगा. एंड देन दैट becomes a downward spiral, and more selling comes and market goes more down. Algo trades kick in. So let's see, but I don't think that is happening. Don't worry, I don't think that's happening. God knows what is the how things are really going to pan out. So my opinion strongly, market consolidating for next week or maybe next week after that also, around 16,400, 500 on the upper side and 15,700, 600 on the lower side. Let's look at Nifty options chain. Interesting thing here is, if you look at the put side, Nifty is at 16,276, 266 here, और उसके नज़दीक ही बहुत हैवी पुट सेलिंग हुई है. ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, राइट? बहुत बड़ा है ओपन इंटरेस्ट. सो दैट टेल्स अस दैट मार्केट माइट फाइंड गुड सपोर्ट हियर, विच इज़ माय ओपिनियन ऑल्सो. अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, और उससे पहले तो होशियार सिंह से मिले. होशियार सिंह जी तो आप जानते ही हैं, स्ट्रीट स्मार्ट आदमी, बहुत ही होशियार हैं, बहुत चीज़ों को बहुत पहले पकड़ लेते हैं. इस बार क्या पकड़ा है उन्होंने वो देखते हैं. होशियार सिंह जी देख रहे हैं इस बार को
बैंकिंग सेक्टर पे उनकी नज़र है. They say he is noticing that most bank have come with inline or good results. कोई नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं मिले. NPAs सब बैंक्स के कम हुए हैं. RBI has been clear with its policy. एंड HDFC और HDFC बैंक जो कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा फॉल उन्होंने शो किया था, अराउंड 25% फ्रॉम द रिसेंट हाइज, वो भी थोड़ा स्टेबलाइज हो रहे हैं. तो ही फील्स दैट दिस इज़ वन सेक्टर वन शुड कीप एन आई ऑन. यहाँ कुछ विनर्स, कुछ जो है अच्छे हमको स्टॉक्स सिक्योरिटीज़ मिल सकती हैं. इस सेक्टर पे फोकस रखना चाहिए. सो मे बी यू वांट टू लुक एट दैट सेक्टर एज वेल. या सो होशियार सिंह इज कीन ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. बैंक निफ्टी की बात करें तो वेरी सिमिलर पैटर्न एज पर निफ्टी, पैटर्न ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज एंड लोअर लोज, बट दैट पैटर्न इज सीम्स टू बी ब्रेकिंग हियर. देयर इज इट्स इनफैक्ट मच मोर क्लियरर इन बैंक निफ्टी चार्ट. तो लोअर थर्ड लो जो है काफ़ी ऊपर बना है, इफ दैट इज द फाइनल लो, एज इज फाइनल फॉर अ वाइल. बट इसलिए मार्केट नीचे जाने का चांसेस कम है. बट ऊपर रेजिस्टेंस भी एक है. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग गैप इन द रीजन ऑफ 34,800 to 35,100. And my sense is market will stay in this region only, between the areas of 33,000 and 35,150. In that region market might consolidate, similarly to Nifty. So this, friends, is my view on the market for the coming week. And the option chain also tells a similar story. On the lower side, which is very close to where the market is now, there is a huge put writing which tells you the market may not fall from here. But whether it will go up significantly, we don't know. I personally don't think so. Okay. And time now for our market expert, Mr. Oreo. He has joined our team last week, and I think there's a lot of people liked him. And he is a thorough gentleman with 4 legs, and he keeps a keen eye and interest in the Indian market. He does a lot of analysis himself, and his opinion proved correct last week. He is bullish, and market turned out to be fairly bullish, 3% up. So let's see what Mr. Oreo has to tell us for this week, which is coming starting 23rd of May. तो एक बार फिर हमारे साथ हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स इन हाउस, मिस्टर ओरियो. आइए इनकी सलाह लेते हैं, जानते हैं कि जो ये हफ्ता 23 मई से स्टार्ट होने वाला है, राइट, 23 मई 2022 में, उस समय मार्केट का माहौल कैसा रहने वाला है, राइट. और हमारे पास है ये 2 चिप्स, ग्रीन एंड रेड. लेट्स सी मार्केट इज गोइंग अप और मार्केट इज गोइंग डाउन. ओरियो, मिस्टर ओरियो, बिफोर यू गो अवे, लेट अस नो योर व्यू. मार्केट अप या डाउन, प्लीज बताएं. मिस्टर ओरियो, वी वेटिंग फॉर योर व्यूज. मिस्टर ओरियो इज क्लियरली बुलिश. मार्केट, as per his opinion, is going up. Let's see what really happens. Thanks, friends, for being with us. Please continue to share this channel with other people that you know, so that they can also benefit. Do share your comments, good, bad, whatever you say, whatever you feel like. Any suggestions? If you like the channel, if you find it meaningful, do hit the like button. That gives us certain motivation. And once again, thank you for your time. God bless you. Happy trading, happy investing. Jai Hind.